Yo, welcome to Physics with Vinay. I am Enrol and I'm back, and this is the official launch video for the best detailed course for JEE 2025 12th syllabus batch 1. Alright, so ये जो course है, this is starting March 4th, जो coming Monday है, तब शुरू होगा, and we're gonna have lectures Monday, Wednesday, Friday, and syllabus completion will be done around, the aim is around end of September or max to max early October, but mostly September end तक syllabus खत्म हो जाएगा 12th का. So इस course में detailed course बोल रहा हूँ, full course batch जो है, we are going to go from 0 to JEE advanced level. ठीक है? So for those of you who do not know, I am on my website vinayopal.com. If you're new here, you can just go to vinayopal.com and just explore my website. Courses में I am currently on the course section, so many courses available for JEE 2024, 2025. ठीक है? So right now I want to talk about the 12th full course batch 1 जो launch हुआ है, and it will start 4th March. Monday, Wednesday, Friday, alternate days in the week. Monday, Wednesday, Friday lectures होंगे. ठीक है? So the structure of the course is going to be कि you will have to watch the lectures. We're going to start off with electrostatics. So एकदम zero से शुरू करेंगे. So I'm not going to assume anything of the 12th chapters. So 12 chapters मतलब electromagnetism, gravitation भी कराऊंगा because gravitation is very closely linked mathematically to electrostatics. तो वो भी मैं इसी कोर्स में कराऊंगा. Optics जो geometrical है, wave optics है, modern physics है, and the new added topics also like diffraction, electromagnetic waves, damped and forced oscillations. Generally 11th में कराता है, but JEE advanced level पे जो करना है, so I'm going to show you some cute methods using the concepts of the other 12th chapters. Anyway, पूरा detail में मैं कराऊंगा, ठीक है, इस कोर्स में. Alright, so यहाँ पर इस कोर्स में जो 12th का batch 1 है, we're going to start off with electrostatics, and the structure is going to be कि lecture तुमको देखना होगा, and the lecture is divided into some parts. Let me just show it to you. Let me just go here. So ये मेरा टारगेट JEE 2025 12th फुल कोर्स बैच 1 का कोर्स पेज पर आ गया हूँ मैं, ठीक है. तो यहाँ पर तुमको दिखेगा, यू विल सी बाय नाउ या स्टार्ट अ फ्री ट्रायल. यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट अ फ्री ट्रायल इफ यू वांट, एंड ये सब वेलकम मैसेज जो है, जो वेलकम मैसेज है, दैट इज accessible for everyone, anyone. मतलब सिर्फ start a free trial करके you can read the welcome message. You can watch this sample video to test your device, and then finally we have our electrostatics lectures. तो मैंने पहले दो lectures already upload कर चुके हैं, जो which will be released on March 4th according to the schedule. ठीक है? So हर chapter में the structure is going to be कि एक module होगा जो मैंने बनाया है specially, and module के हर exercise, 4 exercises होते हैं module में, तो उसमें हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशन जो अगेन मैंने ही बनाए, ठीक है, तो वो वीडियो सॉल्यूशंस है. सो दैट विल बी अपलोडेड ऑन द डे दैट द चैप्टर बिगिंस, एंड इट इज एट द टॉप ऑफ द चैप्टर. ठीक है, चैप्टर के जो सेक्शन है उसके टॉप पर रहता है. देन यू विल हैव लेक्चर 1, एंड लेक्चर 1 भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो इंडिविजुअल छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ लेक्चर को. लेक्चर इज यूजुअली अराउंड 1 आवर, तो उसको मैं छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ जस्ट फॉर ईज ऑफ व्यूइंग फॉर यू. ठीक है, जहाँ पे लेक्चर का एक नेचुरल ब्रेक आता है, लाइक वी शिफ्ट फ्रॉम थियोरी टू प्रॉब्लम्स और वी शिफ्ट फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट टू अनदर, तो आई जस्ट ब्रेक द लेक्चर एट दैट पॉइंट एंड आई डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और मे बी 3 पार्ट्स. ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर पार्ट 1, पार्ट 2, देन सम ऑप्शनल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑन ग्राफ्स वगैरह, वो सब लेक्चर्स है. देन मेन थिंग इज आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर्स यू हैव टू डू द होमवर्क दैट आई विल गिव. और ये जो होमवर्क है उसमें आई कैन गिव यू क्वेश्चंस फ्रॉम माय मॉड्यूल जिसका सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोडेड है ऊपर, और आई कैन गिव यू क्वेश्चंस फ्रॉम बुक्स लाइक एरोडोव, एसबीटी, एंड अगर मैंने एरोडोव या एसबीटी से दिया तो उसका भी मैं वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा. जैसे कि यहाँ पर लेक्चर 1 के बाद मैंने एसबीटी से होमवर्क दिया था. सो एसबीटी, इफ यू डू नॉट नो, इस बुक बाय शशि भूषण तिवारी, वो ऑथर का ही नाम है, एसबीटी शॉर्ट फॉर्म बन गया बुक का नाम. तो इट्स अ वेरी गुड बुक, सॉल्व्ड है, JEE एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, सॉल्व्ड बुक है, बट फिर भी मैं सॉल्यूशंस बनाता हूँ. इन माय डिटेल्ड कोर्स आई गिव सॉल्यूशंस टू एवरी सिंगल होमवर्क प्रॉब्लम दैट आई गिव. ठीक है,
सो एसबीटी के भी सोल्यूशन, जैसे यहाँ पर होमवर्क दिया मैंने, so this is the video solution to the homework that I gave after lecture 1. Alright, then again ये मंडे हो गया, फिर वेडनेसडे को you watch lecture 2 part 1, lecture 2 part 2, and then there is a cute shortcut. और इस कोर्स में of course मैं the cute shortcuts that I'm known for, that people know me for, वो सब एकदम डिटेल में करेंगे, ठीक है, तो वो सब भी होगा. एंड देन अगेन यू हैव टू डू लेक्चर 2 का होमवर्क. एंड लेक्चर 2 में मैंने इरोडोव से भी दिया, एसबीटी से भी दिया, मॉड्यूल से भी दिया. सो इरोडोव और एसबीटी के सॉल्यूशंस भी मैंने दिए, मॉड्यूल के सॉल्यूशंस तो ऊपर ऑलरेडी है. लेट मी जस्ट गो टू JEE 2025 11+12 फुल सिलेबस वाला बैच जो चल रहा है. इट वाज लॉन्च लास्ट ईयर, इट्स एन ऑनगोइंग बैच. आई जस्ट वांट टू शो यू किस तरीके से चैप्टर को स्ट्रक्चर किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है. सो दिस इज एन ऑनगोइंग बैच एंड वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड आवर 11th चैप्टर्स इन दिस बैच. एंड एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है. सो लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल में वी हैव डिफरेंट एक्सरसाइजेस डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस. जैसे सिंगल करेक्ट है एक्सरसाइज 1 में, देन वील गो टू वन और मोर देन वन करेक्ट फॉर एक्सरसाइज 2, देन वील हैव पैराग्राफ टाइप के है, मैच लिस्ट है, एंड इवन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है. एंड हर एक का वीडियो सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया. सो एक्सरसाइज 1 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एंड देन यू वॉच द लेक्चर. सो मंडे को यू विल वॉच द लेक्चर 1 एंड थोड़ा ऑप्शनल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वगैरह भी है. एंड देन आई विल गिव यू होमवर्क. तो होमवर्क में भी आई विल गिव यू फ्रॉम माय मॉड्यूल फ्रॉम एसबीटी एंड यू हैव टू डू द क्वेश्चंस. सो लेक्चर 2, वापस लेक्चर 2 देखो, ये क्यूट शॉर्टकट पढ़ लो, फिर होमवर्क सॉल्व करो. तो इस बार मैंने लेक्चर 2 के बाद होमवर्क इरोडो से भी दिया है, एसबीटी से भी दिया है, एंड दोनों के सॉल्यूशंस भी बना के दिए, ठीक है. सो ऑल द होमवर्क दैट आई गिव यू, ऑल ऑफ देम विल हैव वीडियो सॉल्यूशंस मेड बाय मी पर्सनली. ऑलराइट, मैं ही हूँ और कोई नहीं है. आई एम द वन हु मेक्स द वीडियोस, रिकॉर्ड्स, एडिट्स, प्रूफ रीड्स, अपलोड्स. आई एम द वन हु मेक्स द मॉड्यूल्स, रिकॉर्ड्स द सॉल्यूशंस, एडिट्स देम, सब कुछ मैं ही, ठीक है. ऑलराइट, एंड आई एम द वन हु क्लियर्स ऑल द डाउट्स आल्सो. ऑलराइट, 100% क्लियरेंस, डाउट क्लियरेंस, वो तो वैसे पता है सबको, जो भी मेरे कोर्स में आता है उनको 100% डाउट क्लियरेंस तो मिलता ही है. एंड डाउट पूछने का भी तरीका एकदम एफिशिएंट तरीका है. सो लेट मी जस्ट गो टू कोई भी एक चैप्टर का, तो लेट्स से रोटेशन. सो यहाँ पर कोई भी एक पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से रोटेशन लेक्चर 3. तो यहाँ पे देखो लेक्चर 10 पार्ट 3 में. सो यू कैन, व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एट एनी पॉइंट and you can just post the doubt here, start a discussion. So that doubt will appear, ठीक है ना, and I will reply. यहाँ से मैं reply कर दूंगा ऐसे, ठीक है. So ये थोड़ा एक ओलंपियाड वाला वीडियो है जिसमें मैंने वीडियो बनाया था. तो उसमें once again a student asks his doubt and then I clear it and उसको समझ में आ जाता है. So it's a very efficient way of asking doubts. And all the students who've been enrolled in my courses, in my paid courses, whatever, whether it's crash course or full course or chapter wise course, they will receive 100% doubt support from me, ठीक है. Alright, so ये जो 12th course है, that is currently at 12,900. It's at a big discounted price, 17,000 उसका actual price है. तो right now 12,900. The day we have our first lecture, March 4th, this discounted price will go away. ये जो प्राइस है वापस कभी नहीं आएगा. जो बैच 2 लॉन्च करूंगा मैं अप्रैल में, उसका प्राइस इससे ज़्यादा ही होगा. सो इवन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट वाचिंग और स्टार्टिंग 12th अ लिटिल लेटर, दिस विल स्टिल बी द लोएस्ट प्राइस दैट यू कैन गेट, ठीक है. सो यू हैव टू रियलाइज वन थिंग, दैट इसमें ये जो क्रैश कोर्स है, दैट इज इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ द सिलेबस. You will automatically get enrolled in the crash course. If you are in this full syllabus, then you will automatically get enrolled in the crash course. ठीक है. So अगर तुमको, I know some people think कि ये price बहुत ज़्यादा रखा है मैंने, but this includes this crash course 6200 का. So this is effectively only 6700 का. Alright. So वो ध्यान में रखो, and you will get 100% doubt clearance from me, and the level of content is something you will not find anywhere else. Alright. तो यहाँ पर make sure कि if you're thinking about enrolling for this full course, do it as soon as possible. This discounted price is only till the beginning of the course.
एंड अगर तुम ऑलरेडी मेरे क्रैश कोर्स में हो, लाइक मेनी ऑफ यू मे ऑलरेडी बी इन माई क्रैश कोर्स, एंड 2025 की बात कर रहा हूँ, ये वाले 2025 की बात कर रहा हूँ, तो इफ you want to enroll for this full syllabus course, then just message me, like some of you already have messaged me and asked me for the coupon code. तो you can basically, तुमने जितने में खरीदा है उतने का मैं डिस्काउंट दे दूंगा, so you don't have to pay for the crash course again, alright, because it's already included here. ठीक है, so all you have to do is just message me, email करना मुझे from your registered email ID, and many of you have already done it and already enrolled in this course. ठीक है, all right. So this is the way that I will take you from 0 to JEE advanced level. इसका जो level रहेगा of the content, many students might be wondering कि कहाँ से मैं शुरू करूँगा, एकदम 0 से शुरू करूँगा for the 12th chapters. Mechanics का basics is expected because 11th के chapters में थोड़ा बहुत mechanics जो तुमने पढ़ा है is expected, but I will still try to go from as basics as possible, and you're always free to ask doubts. That's it for today. I'll see you in the course, and I'll see you at the top. Target JEE Advanced 2025. Let's go.